अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आज की वीडियो ऑफ द स्क्रीन की रिएक्शन वीडियो है। कंटेंट बहुत अच्छा है। वही पड़ोसी मुल्क जिसे शायद उसकी सॉफ्टवेयर अपडेट हुई है, और अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं, व्लॉगर्स भी होते हैं, उसमें फ़ीमेल और मेल भी होते हैं। ज़ाहिर है वो इधर सब कॉन्टिनेंट में जब आते हैं तो दो मेजर कंट्री पाकिस्तान इंडिया, तो इसको वो जो कंपैरिजन इसका करते हैं टूरिस्ट के हवाले से कि सेफ़्टी के हवाले से सेफ़ प्लेस कौन सी है, चीपर है, जहाँ प्राइस कम है, और फिर आसानी के साथ फिर सफाई का बड़ा मुनज़्ज़म और बेहतरीन इंतज़ाम है, तो वो पाकिस्तान को तरजीह देते हैं। इंडिया के हवाले से वो ख़ुद बता रहे हैं। और जब देखें फिर आप हम ना बात करें तो हमारी बात बड़ी चुभती है भारतीयों को, हिंदुत्वा को, इंडियंस को बड़ी चुभती है। लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया, जब वर्ल्ड के लोग जो यूरोप के इलाके से ख़ास तौर पे इस इलाक़ों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सैर करने आते हैं, तो वो जब बताते हैं कि जो ट्रैश है इंडिया में बहुत ज़्यादा, गंदगी बहुत होती है, शुकशाला, ज़ाहिर आपको भी पता है, वॉशरूम्स की कमी है, और इतना बड़ा जो मुल्क जो बड़ा सेकुलर होने का दावेदार है और दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत का भी दावेदार है, तो ये जमहूरियत और उसके जो सेकुलर होने के दावे हैं, फ़ीमेल टूरिस्ट हमेशा खाइफ रहती हैं, डर और खौफ का माहौल होता है। वो कहते हैं जी हम अपने आप को अनसिक्योर फ़ील करते हैं, यहाँ सिक्योरिटी बहुत ही है, महदूद होती है, और जगह जगह पे फिर जो नौजवान हैं उनकी तरबियत जो है, मुआशरा ऐसा है कि सभी हिंदुस्तानी बुरे नहीं हैं, लेकिन उनमें ज़ाहिर है उनमें छुपे हुए हैं जो कि वो बताते हैं कि फ़ीमेल्स के लिए अकेले पूरे हिंदुस्तान के अंदर सैर व तफरी करना बड़ा ही दुश्वार गुज़ार और तकलीफ़ दे और जानलेवा भी होता है। इसमें बहुत कुछ लुटाना भी पड़ता है। तो ये सब कुछ यहाँ बताते हैं कि डकैती का भी होता है, फिर कमीशन ली जाती है, एजेंट हजरात होटल्स को उस होटल्स में लेके जाते हैं, गाइड्स जो होते हैं कि यहाँ पर उन्हें अपनी कमीशन जो है वो अलग से वसूल करनी होती। ये वो मिसाइल हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद और दीगर शुमाली इलाका जात हैं उनके बारे में उन्होंने खुल के कहा है कि ये कुदरती माहौल से, कुदरती मनाज़र से, कुदरती नज़ारों से माला माल है, और बेहतरीन मुल्क है पाकिस्तान, जो कि सैर व तफरी के लिए बहुत ही ज़्यादा सिक्योर और महफूज तरीन है, साफ़ सुथरा है, जहाँ पर आपको हर चीज़ जो है ज़रूरियाती ज़िंदगी हो, खुर्दोनोश हो, खाने पीने की चीज़ें हों, फिर आने जाने सब की सहूलियत बहुत ज़्यादा सस्ती हैं दूसरे ममालिक के हवाले से। In terms of that part of India and Pakistan, I'm going to say Pakistan takes the win. Now, on the whole, we're going to talk about money and scams. India, there is a lot of scams, and it just seems to be part of the culture that people are trying to take your money. Pakistan, no one seems to be trying to get your money off you in terms of rickshaws, tuk-tuks, taxi rides, anything like that. The people in Pakistan will try and give it to you for free. Now, that just will not happen in India. No way you will ever be given a taxi ride for free. Well, that's from my experience anyway. So yeah. इंडिया में जो टूरिस्ट रहते हैं उनको एज अ अपॉर्चुनिटी लिया जाता है कि हम उनसे कैसे निचोड़ सकें, कैसे पैसे निकाल सकें, चाहे वो उनके रिक्शे वाला हो, टैक्सी वाला हो, होटल वाला हो, टूरिस्ट गाइड्स हो, ये सारे इस तरह निचोड़ते हैं। ये इस जगह पे है। In terms of money and scams, I feel like also Pakistan takes the win now. Another day in Pakistan, however, it's raining, which is not ideal. Hello sir, nice to meet you. Hello. Oh, thank you. Wow, Pakistan hospitality off the bat. And the outside area as well, with the mountains. Oh, is it open? It's open. Ta-da, look at this. It's so beautiful. Even on a bad day, Pakistan is still beautiful. Even in a bad day, Pakistan is still beautiful. यानी बुरे दिनों में भी पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है. And even on a good day, India is still full of trash. और इवन के अच्छे दिन पर भी इंडिया फुल ऑफ ट्रैश है, गंदगी से भरा हुआ। Am I lying? No, I'm not lying. What? Tell me a place you saw that didn't have any trash. Go. I went to Guy, there was trash everywhere. I'm scammed everywhere. You didn't see any trash? कहता है दूसरे से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा इलाका है भारत का जहाँ पे ट्रैश गंद नहीं है। तो ये कहता है कि दूसरा बंदा कहता है दूसरा टूरिस्ट के गोवा। फिर ये कहता है कि वहाँ पर मेरे मुझसे बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ है, हर तरफ गंद ही गंद है। I still want to go on a mission to find a good part of India, I'm not going to lie. And I'm actually serious. I got scammed in every place in India. But I do actually want to go to India one day and just try and find somewhere that's actually nice. Like, I want my last image of India to be like a good...
ये एक कोरियन टूरिस्ट है, ये ज़रा पढ़िएगा, ये कोरियन ज़ुबान में बात करिए, लेकिन ये आप पढ़िए। もう本当に臭いの。あと洗面台の上にもうね、これはね、一生忘れられないフライト。これは人種差別とかじゃなくて、空港から出たらめっちゃ蒸し暑いの。しかも変な酸っぱい臭い匂いがするの。 जैसे ही कहती है, मैंने वहाँ का एयरपोर्ट छोड़ा तो मुझे गाय के गोबर की स्मेल आती रही लोगों की बॉडी से। もうプーンってくる。もうね、エレベーターの中が一番やばい。あと露出度の高い服は絶対に着ちゃダメ。なんか少しでも露出してると、それはされたいんだって。 In India, there would be a lot of vegetarian people. The diet is generally swine, waste. In Pakistan, oh my god, food is a religion, it's love language, it's everything. And they do not know how to give a little bit of food to someone. They will always give you so much. And lots of meat, lots of oil, salt, spices, sugar in Pakistan. In India, it's difficult in terms of personal space. Spices are really cramped, and the biggest difference is how close people come to you. At least in Pakistan, it's the second time I'm coming back to this country, and I have never ever had a bad experience with any kind of harassment. So it was very safe as a woman. Surprisingly. पाकिस्तान औरतों के लिए बहुत सेफ है, फिर दूसरा विजिट है और मैंने एक भी बार जो है वो हरेसमेंट फेस नहीं की। अब इंडिया का सुनिएगा ये क्या कहते हैं। Well, you're in a conservative country. You'd expect to be safe, right? Mostly, yes. Yeah. एंकर कहता है कि पाकिस्तान एक कंजर्वेटिव मुस्लिम कंट्री है, तुम फिर भी वहाँ पर सेफ रह रही हो या रही हो। तो उसने कहा हाँ मोस्टली। Yeah. And you didn't feel that in India? Absolutely not. एब्सोल्युटली नॉट इन इंडिया। इंडिया में मैं सेफ नहीं रही। हरेसमेंट ही हरेसमेंट होती है, स्कैम्स ही स्कैम्स होते हैं। Because of the personal space, there is no personal space there. Yeah, but people like grab you. Especially interesting thing is men, sometimes they will keep more distance, but Indian women, they find, okay, if I'm a woman and you're a woman, then we can get as close as I am comfortable. And sometimes I had experiences like someone was like taking my handbag and rummaging through my wallet, all my belongings. What, like an Indian woman? Yeah. Well, we're out of Delhi, guys. We finally made it out of the hellhole, post-apocalyptic, polluted landscape that is Delhi, and we made it to Varanasi, which apparently is not much better. Delhi, not much capital of India. Another guy's following me. No, I'm okay. Jesus Christ, India. They say India is a very polarizing place. Some people love it, some people hate it. I think I'm leaning towards hating it right now. This is disgusting. It's the most polluted country I've ever been in, hands down, not even close. This makes me want to hug a tree and become an environmentalist and hire Greta Thunberg or whatever her name is. And what was the place you felt the most scammed or likely to get scammed? Teodoro. Do I even need to explain? It was India. It was definitely India. The places I went were an all-out assault on your senses. दुनिया में सबसे ज़्यादा स्कैम कहाँ पर होता है? इंडिया में. Assault on your senses. Even the countryside. When I went to that meditation retreat, like I'm meditating, sitting there, and I'm smelling burned plastic and dog shit and spit and human excrement, and it's just smog and it's just fucking A, man. It's a very intense place. You know, and I've been to like Colombia and stuff, and I kind of understood like the hustle culture and stuff like that. But in India, it's just on a completely another level. So that guy followed me from the bus. I feel like I have numerous stalkers. So there's your answer. Pakistan is one of the most unique places on the planet. The people are astonishingly friendly. But I met some really unique characters there. The food was amazing. The hospitality was out of this world. But I was with this religious kind of royalty person, very wealthy guy, and he gave me my own house for the night. Like they had this whole compound with servants, and cooks, and chefs, and drivers, and maids, and everything. And so they basically gave me my own house. So anyways, Pakistan, extremely interesting place. I would love to go back there along with Iraq. It was my decision to go to India, and I take full responsibility for that. अब इस औरत की इस लड़की की बातें सुनिएगा, आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि इतना गंद है भारत के अंदर की लड़की कह रही है कि ये मेरा अपना डिसीजन था और मैं इसका ब्लेम खुद को करूंगी कि मैं इंडिया क्यों गई।
take full responsibility for that. It took me about 6 months to decide that I was definitely going to go to India. When I arrived in Delhi to start the tour, I was a little surprised to realize it was just me on the tour. But in the back of my mind, I thought, that's okay. That means that the driver and the guides have less people to worry about, and they'll be a lot closer to me at all times. So if anything, maybe it'll make it safer. It didn't. Let's start off easy and talk about the money and the scams. Because when I was in Delhi, Agra and Jaipur, I was seen as a walking wallet, and it was dehumanizing. I'm going to tell you how so you can avoid them. In Delhi, the guide started talking about pashminas, the scarf wrap kind of things, and he was really setting the scene. He was talking about the people who make them and how they live in poverty and all this kind of stuff. It's really hard for them to make money. Shortly after that, he starts saying how we can support them by going to this textile museum. And I said to him, no, I don't want to go there. And he kept telling me about it, kept bringing it up. And I thought it's easier just to go and leave. So I said to him very clearly, we can go there. You're telling me it's an actual textile museum, but I'm telling you, the second somebody tries to sell me something and I feel pressured to spend money in that shop, I will leave. And he said, no, nobody's going to try and sell you anything. And part of me is thinking, I'll go and I'll find out if he's telling the truth or not, and then I can tell you, right? So you know what's going to happen and you can really avoid it. So we go to the shop, they take me straight down into the basement. It is not a museum, there is no cultural aspect, bringing out all these pashminas and laying them out in front of me. And as soon as the guy starts talking about price, I get up and I say to him, I told you I didn't want to be sold anything. And I start leaving upstairs at a rate of knots. He's chasing after me, yelling at me. Now, the problem here is that when these things occur, the people that take you there, they get a kickback. So any money you spend there, they will get a percentage of that in their pocket. हर एक शख्स की परसेंटेज होती है। आपको गाड़ी वाला लेकर जाएगा, उसका भी परसेंटेज होगा जहाँ से आप कुछ खरीदेंगे। उसके अलावा आप कोई टैक्सी लेंगे, होटल बुक करवाएंगे तो एजेंट होगा, टूरिस्ट गाइड होगा, उनका भी हर चीज़ में। आप कपड़े खरीदते हैं उसमें भी परसेंटेज, आप होटल का कमरा लेते हैं उसमें भी परसेंटेज। ये फेस किया इस लड़की ने। अब आगे सुनिएगा, ये सब होने के बाद उसके साथ क्या शुरू हुआ। Of that in their pocket. So they have a real incentive to take you to places you don't want to go, so they can get money out of you so that they can earn extra money off you. Anyway, the shop guy is yelling at me, they're yelling at me, we get in the car, we leave. He still expected a tip at the end of that. I was also taken to restaurants where the prices were significantly increased for me as a tourist. So once this started to happen and I started to see this pattern of how much I was paying for food and realizing this isn't right, I said to the guide and the driver, I'm not going to anywhere you guys take me to eat anymore. You're not actually taking me to places that... टूरिस्ट गाइड या ड्राइवर जहाँ पर खाना खिलवाने लेकर जाते हैं, वहाँ पर भी उनका हिस्सा होता है, वहाँ पर भी उनका कमीशन होता है। यानी टूरिस्ट को डबल पे करना पड़ता है, एक तो होटल को, दूसरा उन लोगों के लिए भी जो उन्हें लेकर आते हैं। Places that are best for me as a visitor, you're taking me to places that are best for you as somebody that wants my money. Now, unfortunately, at this point, the scams have stopped, the sexual harassment has started, and अब इस लड़की ने क्या किया कि उन सब से खुद को अलग कर लिया, टूरिस्ट गाइड को भी छोड़ दिया, ड्राइवर को भी छोड़ दिया, खुद ट्रैवल करना शुरू किया। फिर उसके साथ क्या हुआ, सेक्सुअली हरासमेंट शुरू हो गई। यानी अकेली लड़की देखकर लाइनें मारना शुरू हो गए, हाथ लगाने शुरू हो गए, जो कि उनका वतीरा है। तभी तो रेप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं दिल्ली को। ये है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी की और दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की कहानी। नरेंद्र मोदी साहब इसके विश्व गुरु हैं, यानी दुनिया भर के गुरु। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब